Bismillahirrahmanirrahim. Please confirm that the slides are visible to you and my voice is clear. Yes, sir. Today we are going to study about the interest rate, about the difference between simple interest and compound interest. We will solve the problems during this lecture. Starting with the definition of interest. Interest is the rental amount charged by a financial institution for the use of money. It is defined in a very clever way that that a simple person can say that it is the rent that we are taking for the use of money. इसको समझना भी it's easy. See that whenever we give a car on rent, at the end of the day the person will have to return the car and also to pay the rent. इसी तरह से if we rent a house, at the end of the day when we are leaving we have to vacate the house, and we also need to pay the rent on monthly or regular basis. In the same way, if we remove the physical item, that is the car or the house, and we just lend some amount, so on that amount we need to pay the rent. So that rent is basically called as interest. तो जो अमाउंट के रकम के इस्तेमाल पर जो रेंट दिया जाता है उसको इंटरेस्ट का नाम दे दिया गया. That's how the interest is being defined. और इसके the interest from are being seen from two different perspectives. तो उन perspectives को अगली slides में we will see. Interest rate or the rate of capital growth is the rate of gain received from an investment. Now, interest rate is the rate of capital growth, is the rate of gain received from. You must have seen that there is some percentage value that is written. जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो एक परसेंटेज वैल्यू आपके साथ शेयर की जाती है कि इस पे आपका जो है वो इफ़ यू आर आपको लोन दिया जा रहा है और आपको इस परसेंटेज जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट होगा, उतनी अमाउंट उस परसेंटेज वैल्यू के साथ आपको रिटर्न करनी है. So the use of the interest rate will come in the formula, but that is the rate of capital growth. Usually this rate of gain is stated on a per year basis and it represents the percentage gain realized on the money committed to the undertaking. Usually per year basis पे इसको express किया जाता है like if we say that 11% interest rate indicates that for every dollar of money used an additional $0.11 must be returned as payment for the use of money. So 11% means that we have to return $0.11 as the payment for the use of money. The interest rate is determined by mutual agreement between the borrower and the lender and is known as the market rate. तो दिस इज जब भी कोई हम लोन लेते हैं, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वी नीड टू साइन. जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं इट मीन्स दैट वी आर एग्री ऑन दैट वन. यूजुअली जो है वो देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिस पे एग्री किया जाता है. साइन मीन्स दैट वी आर एग्री ऑन दैट वन. क्योंकि समटाइम ये सिनेरियो आता है कि एक डॉक्यूमेंट फ्लोट कर दिया जाता है और जस्ट हमें उस पर साइन करने होते हैं लोन के केस में भी. तो फिर ये म्यूचुअल एग्रीमेंट का क्या मतलब है? तो वो साइन करना ही दैट इज बेसिकली द म्यूचुअल एग्रीमेंट. So if there is anything to be discussed, so before signing that document you need to discuss that one. In one aspect, interest is an amount of money received as a result of investing funds, either by lending it or by using it in the purchase of materials, labor, and facilities. Interest received in this connection is gain or profit.
जिस तरह I have already told you that there are two different perspectives to see the interest. One is from the lender's perspective and the other one is from the borrower's perspective. From the lender's perspective, when that person lend amount and on a certain interest rate, when that person will receive the amount, the loan, so the original amount will be returned along with the along with the interest, and that interest is called as the gain or profit. उसको गेन या प्रॉफिट लैंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कहते हैं? क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट के साथ उसको कुछ इजाफी रकम भी मिली है, ठीक है, जिसको गेन और प्रॉफिट कह दिया कि ओरिजिनल जितना लोन था उसके साथ उसको जो है एडिशनल अमाउंट इंटरेस्ट की मिली है. दैट्स वाई फ्रॉम द लेंडर्स पर्सपेक्टिव इट इज गेन और प्रॉफिट. In another aspect, the interest is an amount of money paid out as a result of borrowing funds. Interest paid in this connection is a cost. Now, from the borrower's perspective, when that person return the loan, so he has to return the original amount plus some amount additional to that one, and as an interest. So that from a borrower's perspective, because the money is going out from his pocket in addition to the original loan, so that is called as a cost. From the borrower's perspective, the same interest is taken as cost. Now we will see the concept of time value of money. The time value of money concept will be discussed under two headings: the earning power of money and purchasing power of money. So the earning power and purchasing power of money will be discussed in coming slides. But here the concept of time value of money, we will see that because money can earn at a certain interest rate through its investment for a period of time, 1000 rupees received at some future date is not worth as much as in hand at present. This relationship between the interest and time leads to the concept of time value of money. Means that if we have 1000 right now, so we can invest that one in the hope that we will get 1000 plus some interest on that one, which is called previously as the profit or gain. So money has and time has some relationship. As it is mentioned, 1000 rupees in hand now is worth more than 1000 rupees received n years from now. Why? Because of the time value of money, because we do have the chance or the opportunity to invest that 1000, which will return more in future in terms of gain or profit, because having 1000 now provides the opportunity for investing that for n years more than 1000 to be received at that time. So that is the time value of money, that if we have certain amount, we have the opportunity to invest in the hope to get more in the future. Since money has earning power, this opportunity will earn a return, so that after n years the original 1000 plus its interest will be greater than 1000 received at that time. Thus, the fact that money has a time value means the equal amounts at different points in time have different value, as long as the interest rate can be earned exceed to zero. ये उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब इंटरेस्ट रेट जीरो से ज़्यादा होगा. अगर इंटरेस्ट रेट जीरो है तो फिर आपको तो देयर विल बी नो गेन और प्रॉफिट. दिस फिनोमिना इज ओनली एप्लीकेबल in that case. We do have the chance that we invest $1, $1000 now, and we will get more in future. That will be $1 plus interest or $1000 plus interest. But the time need to be passed.
Now, it is also true that money has time value because the purchasing power of 1,000 changes through time. During periods of inflation, the amount of goods that one can vote for a particular amount of money decreases as the time of purchase occurs further out in the future. Therefore, when considering the time value of money, it is important to recognize both the earning power of money and purchasing power of money. ये परचेजिंग पावर के कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया मीन कि इफ़ वी हैव सम अमाउंट लाइक 1,000 राइट नाउ वी कैन बाय मोर आइटम्स as compared to the 1,000 that we will have after 1 year. After 1 year, from the same 1,000 we will be able to buy less items. That is because of inflation and some other factors which will be we are going to discuss in purchasing power of money. But in simple words, because we have the money has the purchasing power which varies with the passage of time. That's why we need to consider it in the time value of money as well. Now we will discuss the earning power of money with an example. The concept of earning power of money has been explained with this example. Funds borrowed for the prospect of gain are commonly exchanged for goods, services, or instruments of production. This leads to the consideration of earning power of money that may make it profitable to borrow. अब बोरो क्यों किया जाता है? यूजली बोरो करने के लिए का पर्पस क्या होता है कि हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, कोई आइटम्स बाई करेंगे, गुड्स सर्विसेज और प्रोडक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स बाय करेंगे विच विल हेल्प अस in production, in manufacturing, or in the betterment of the services, or even to provide some services, and that will result in making more money out of our investment. So that's why we usually borrow amount in terms of loan. This can be seen from this example. Consider the example of Mr. ABC, who manually digs ditches for underground cable. For this, he is paid 0.40 per foot and average 200 feet per day. Weather conditions limit this kind of work to 180 days per year. Thus, he has an income of $80 per day worked, or $14,400 per year. यहाँ पे एक सिनेरियो डिस्कस किया गया है कि एक लेबर पर्सन है मिस्टर ABC, वो अपने जो मैनुअल काम कर रहा है तो ही इज़ अर्निंग $14,400 पर ईयर. अब उसकी आगे फर्दर डिटेल है कि 200 फीट पर डे ऑन एवरेज वो अपना वर्क करता है और 0.40 पर फुट चार्ज करता है. Because of weather condition, instead of 360 days, he is only working for 180 days, and the daily income जब वो काम कर रहा है is $80. Now, an advertisement brings to his attention to power ditcher that can be purchased for $8,000. Mr. ABC buys the ditcher after borrowing $8,000 at 14% interest. The machine will dig an average of 800 feet per day. By reducing the price to $0.30 per foot, he can get sufficient work to keep the machine busy when the weather will permit. Now here the scenario is that he saw the advertisement of a power ditcher. यानी उसने एक इक्विपमेंट देखा जो कि उसके काम को असिस्ट कर सकता है. The cost of that power ditcher is $8,000. क्योंकि उसके पास he is poor man, he do not have $8,000 to buy that one, so he borrow $8,000. But because it's a loan, $8,000, so the interest is attached with it, and that interest is 14%. In other words, the 14% interest पे उसने 8,000 लोन लिया. The machine will dig an average of 800 feet per day by reducing the price to 0.30 per foot.
यहाँ पे एक फर्दर इंफॉर्मेशन ये है कि यूज ऑफ मशीन जो है मेक इट पॉसिबल कि वो 800 फीट पर डे जो है वो काम कर ले, बट द प्राइस पर फुट इज बीइंग रिड्यूस्ड. So can anyone tell that why this happened, that he has reduced the price from 0.40 to 0.30 per foot? जरा सोच के बताएं कि यहाँ पे जो पर फुट चार्ज कर रहा था वो कम कर दी है उसने अपनी प्राइस. कस्टमर अट्रैक्शन. ओके, एनी अदर रीजन? सर क्योंकि अब वो पर डे ज़्यादा काम कर सकता है तो वो इसके अंदर भी काफ़ी प्रॉफिट अपना कर सकता है, इसीलिए उसने शायद इस तरह की. हाँ, और कोई इसको आंसर करेंगे? दोनों बातें ठीक हैं. थोड़ा सा हम इसको जो है वो फर्दर देखते हैं. यूजली जब भी आप कोई भी आइटम बल्क में परचेज करते हैं तो क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जाता है. तो इसी तरह से अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी जो रेट्स हैं वो यूजली ड्रॉप कर दिए जाते हैं. मोस्टली दैट इज़ द सिनेरियो. सेकेंड वन, जो बात अट्रैक्शन की हुई, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप उसको ज़्यादा काम करना है टू 800 पर फीट, तो उसके पास उतना काम भी अवेलेबल है. इक्विपमेंट परचेज कर लिया, वो आइडल तो नहीं रह सकता, इक्विपमेंट उसको. तो दैट्स वाई उसको सफिशेंट अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है. और वर्क क्योंकि मार्केट में और भी लेबर पर्सन होंगे तो उसको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो उसको ही जॉब मिले, उसको ही काम मिले, तो उसने 0.30 जो है डॉलर्स वो चार्जेस कम हो गए. और तीसरा जो बात हुई कि क्योंकि ज़्यादा काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स कि उसमें भी उसको सफिशेंट या रीजनेबल अर्निंग्स हो रही हैं. तो वो दैट इज़ फ्रॉम द एथिकल पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू किया जा सकता है कि आप बिकॉज यू आर मेकिंग मनी, इनफ मनी विद योर वर्क, सो यू मे रिड्यूस द प्राइसेस. बट द मेजर रीज़न इज़ कि जब भी बल्क में जैसे मैंने परचेज की बात की तो क्वांटिटी डिस्काउंट्स होते हैं. और इसी तरह से आपको, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा काम रिक्वायर्ड है और अट्रैक्ट करना है आपने कस्टमर को, तो आपने जो है अपनी प्राइस को रिड्यूस कर दिया है. सो दैट कैन बी द रीज़न दैट वी कैन थिंक. Estimated operating and maintenance cost for the ditching machine are $40 per working day. At the end of the year, the machine is worthless because it is worn out. A summary of the ventures as follow. Now you can see that additional thing here is the operation and maintenance cost. So per working day, $40 is the operations and maintenance cost. अब एक साल जब वो मशीन के साथ जो है वो काम कर रहा है तो क्या उसकी अर्निंग्स होती हैं उसको देख लेते हैं. Receipts means amount, cash inflow, amount coming in, that the amount going from his pocket, or cash outflow. The cash inflow is amount of loan that he has taken is $8,000. Payment for ditches dug, that is $43,200. So this is the amount that is coming in his pocket in that year. That is $51,200. The disbursements or cash outflow, that is purchase of ditcher, that is $8,000. Operating and maintenance cost $7,200. Interest is $1,120. Repayment of loan $8,000. The sum is $24,320. ये हमारे कैश आउटफ्लो हैं जिसमें you can see 8,000 twice. परचेज ऑफ टीचर एंड रीपेमेंट ऑफ. तो कोई मुझे ये बताएंगे कि ये ट्वाइस क्यों आया है 8,000?
Anyone? सिंपल सा आंसर है, जस्ट समटाइम कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको क्लियर करने के लिए जस्ट कोई बताएं कि 8,000 यहाँ पे डिसबर्समेंट्स में ट्वाइस आया है, 2 बार लिखा हुआ है, इसकी क्या रीज़न है? नो आइडिया सर। इट्स वेरी इजी, जस्ट थोड़ा सा सोचें। देखें 8,000 जो उसको उसने लोन लिया, ये 8,000 ये उसने लोन लिया था। अब जैसे ही उसने लोन लिया, उसने जाके क्या किया, जो डिचर है या मशीन है उसको परचेज कर लिया। ठीक है, ये डिसबर्समेंट में जो पहला लिखा हुआ है 8,000, दैट इज कि उसने जो लोन की अमाउंट थी उसका जाके $8,000 से वो मशीन या इक्विपमेंट जो है वो परचेज कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब उसने लोन तो वापस करना है, उसने एट द एंड ऑफ द ईयर वो मशीन तो वर्थलेस है, बट दैट पर्सन हैज टू रिटर्न द लोन, एंड दिस वन द 8,000 जो लास्ट पे आ रहा है दैट इज द रीपेमेंट ऑफ लोन। तो उसने लोन की रीपेमेंट भी करनी है, दैट इज $8,000। इस वजह से 8,000 ट्वाइस आया है, ये दोनों कैश आउटफ्लो हो रहे हैं कि एक बार उसने जो है वो इक्विपमेंट परचेज कर लिया, और दूसरा कैश आउटफ्लो किस वजह से कि लोन लिया था, लोन उसने रिटर्न करना है, तो 8,000 लोन रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? जी सर। जी सर। An increase in the net earnings for the year over the previous year is 12,480. That is the increase in net earnings. क्योंकि इस साल उसकी जो कैश इनफ्लो ओवरऑल जो है डिफरेंस आया है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का, दैट इज 26,880, और प्रीवियस ईयर में उसकी जो अर्निंग्स हुई थी दैट वाज 14,400। इट मींस 12,480 is the over and above from the 14,400 that is enjoyed by Mr. ABC. तो इसको समराइज करते हैं, स्लाइड्स पे भी किया हुआ है, इसको फर्दर डिस्कस भी कर लेते हैं। दिस एग्जांपल इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज द अर्निंग पावर ऑफ मनी. It was an instrument of production, the power teacher that enables Mr. ABC to increase his earnings. Borrowed money made it possible for the instrument of production to be employed. So here you can see कि जैसे हमने स्टार्ट में किया था कि बात की थी कि हम लोन इसलिए बोरो करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उसमें असिस्टेंस हो, और इक्विपमेंट परचेज किए जाते हैं, सर्विस उसको जनरेट किया जाता है या एनहांस किया जाता है। सो दिस एग्जांपल गिव अस द अंडरस्टैंडिंग कि जब इक्विपमेंट परचेज किया तो उसका काम जो है उससे ज़्यादा हो गया, और इवन दो कि उसको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसको देनी पड़ी, लोन भी रिटर्न करना पड़ा, उस पर इंटरेस्ट भी रिटर्न करना पड़ा, बट ओवरऑल द अर्निंग्स हैव बीन इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पे एक चीज़ हम फर्दर इसमें इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे तो लोन और उसके इंटरेस्ट की बात हुई है। इवन ए कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट फंड्स, उनके अपने पास फंड्स हैं और वो लोन लिए बगैर अपने जो है वो इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, नए इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दे द कंपनीज एंड द इंडिविजुअल्स और द एंटरप्रेन्योर्स दे शुड इन्वेस्ट ऑन दैट वन, so that not only the
The earnings will be improved, but also the quality and the rate of work done will also be improved by the use of the latest technology and the instruments and machines. इसको you can easily understand कि अगर हम मैनुअल ड्राइंग्स कर रहे हैं तो कितनी एफर्ट और चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और अगर हम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर कॉस्ट करेगा, बट we can have more work and we will have other advantages as well. So that is the concept of earning power of money that we have seen in this slide. Now the concept of purchasing power of money. Here it is mentioned that the prices increase or decrease, the amount of goods or services that can be purchased for a fixed amount of money decreases or increases accordingly. Prices for goods and services are driven upward or downward because of numerous factors at work within the economy. For example, increase in productivity and in the availability of goods tend to reduce prices, while government policies tend to increase prices. When all such effects are taken together, the most common result has been that prices increase. इस सारे को मैं समराइज करता हूँ कि पहली बात तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी में क्या है कि इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय आइटम्स. नाउ व्हाट हैपन कि यूजली क्योंकि आइटम्स की प्राइसेस भी जो हैं वो उसमें चेंजेस आती हैं, इंक्रीज होती हैं, ये डिक्रीज होती हैं. यूजली जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज की तरफ जा रही होती हैं, जैसे एंड पेज पे भी बताया गया. सो अगर आपके पास 1000 रुपीज़ आज हैं तो आपकी जो यू कैन परचेज सर्टन आइटम्स जो कि मे बी आफ्टर 1 ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस आप वही आइटम्स 1000 की बाय ना कर सकें. ठीक है. अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है कि यूजली जो आपके इंजीनियरिंग एफर्ट है या द अदर फील्ड्स जिसमें मैनेजमेंट है और के हैं, दे जैसे प्रोडक्टिविटी का फिनोमिना यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं सो दैट हमारे पास जो लार्ज क्वांटिटीज में जो है वो आउटपुट अवेलेबल हो. तो जब हम लार्ज क्वांटिटीज में बनाते हैं तो यूजली हमें कुछ न प्राइसेस में एक ड्रॉप जो है वो नज़र आता है. दैट मे बी बिकॉज ऑफ कि हम बल्क में रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं और ऑप्टिमाइज अपने सिस्टम को किया हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है, जिसका इफेक्ट जो है वो एंड पे प्रोडक्ट की प्राइस पे भी है कि हम जो है हमें पर आइटम जो कॉस्ट है वो कम आ रही है. इस चीज़ को हम अपने कॉस्ट के लेक्चर में भी कुछ कवर कर चुके हैं, द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और उसमें डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के. लेकिन होता क्या है कि आप फ्रॉम द engineering effort and from the concepts that are being used in the engineering management, उसको आप करके अपनी जो आइटम्स की प्राइसेस तो कम कर लेते हैं. लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह से सेट होती हैं कि आपकी ओवरऑल जो है दे ऑलवेज वांट टू इम्पोज टैक्स. तो वो टैक्स इम्पोज करने के उसमें होते हैं. तो जब हम ओवरऑल इसका इफेक्ट देखते हैं तो देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द आइटम्स कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस करते हैं. ज़्यादा आप करेंगे अमाउंट, अगर इनकम हो रही है तो अकॉर्डिंगली आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा. और इसी तरह बहुत सारे वेज हैं गवर्नमेंट के टैक्स लेने के. तो ओवरऑल क्या होता है कि आपकी आइटम्स की प्राइसेस में इंक्रीज ही विजिबल होता है. ठीक है. तो दैट इज क्योंकि फिर प्राइसेस में इंक्रीज विजिबल है, इसी वजह से ये कहा जाता है कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट या आज है दैट यू कैन बाय सर्टन आइटम विद लाइक जो बार बार एग्जांपल दे रहे हैं कि 1000 रुपीज़ में अगर एक आइटम आज बाय कर लेते हैं तो मे बी आफ्टर 1 ईयर आपको सेम आइटम जो है 1000 की ना मिले बल्कि इससे ज़्यादा प्राइस आपको पे करनी पड़े फॉर द सेम आइटम. the remaining portion हम after break करेंगे. If you have any questions you can ask right now.
9:40 पे हम सेकंड क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चंस हों? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? नो सर। Okay. 9:40 पे we will start the second half.